welcome to Prudent News. First, a look at the headlines. Congress revamps 21-member Central Committee. Digvijay Singh is Goa in charge. Luisinho gains weight, gets 6 states as desk in charge. Modi's elevation in BJP, claims first exit from NDA. Janata Dal United breaks up, calls for Bihar Bandh. Nitish government to prove confidence vote. Monsoon gets rough. Heavy rainfall, gusty winds uproot trees at Usgaon and Messays, crushes 3 parked school buses, loss worth lakhs, no injuries. Gosavardhan Samiti opposes slaughtering of bulls too, says no need of dirios, slams CM for neglecting party workers and wooing minorities. Staunch medium of instruction crusaders change their stand, feel soft corner for Parrikar government, says things are much better now, must understand government's difficulties. And now the news in detail. Digvijay Singh is Goa desk in charge. He has replaced Sudhakar Reddy. Party has reconstituted its 21-member Central Working Committee headed by AICC President Sonia Gandhi. Luisinho Falero, as General Secretary, has been awarded the responsibility of 7 northeastern states as desk in charge. MP Shantaram Naik will assist Digvijay Singh as one of the secretaries. Congress has pulled up its socks for Lok Sabha polls. Union cabinet reshuffle is expected in the coming week. अगले जनरल सेक्रेटरी हैं दिग्विजय सिंह जी। उनके पास है आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक। आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक। इनके साथ सेक्रेटरीज हैं डॉक्टर ए चेल्ला कुमार, आरसी खूंटिया, शांताराम नायक। अगले जनरल सेक्रेटरी हैं लुइजिनो फेलेरो। इनके पास है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। नई कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो बनी है, इनकी संख्या 21 बनती है। कुछ स्थान अभी रिक्त हैं। 12 जनरल सेक्रेटरी हैं। उनके नाम हैं श्री दिग्विजय सिंह, श्री गुरुदास कामत, जनार्दन द्विवेदी, लुइजिनो फेलेरो। शांताराम बाब, दिग्विजय सिंगाक गोयचो इन्चार्ज केला, गोयचो प्रभारी केला आणि तुम्ही तांकां असिस्ट करतले गोंयान। सो कितें एजेंडा आसतलो? तीन राज्य आसात ज्याचे सकल दिग्विजय सिंगाक इन्चार्ज दिल्ले आसात आणि आमी सेक्रेटरीज 3 आसात। पूण जो पळय सेक्रेटरी त्या राज्यांतलो आसा ताका थंयचो कारभार दिनात। म्हणजे म्हाका गोवा मेळचो ना, हांव घेवचोय ना, कळ्ळें? म्हणजे दुसरे 3 सेक्रेटरी आसात, मिस्टर आर.सी. कुटिया, हांव आनी दुसरे एक आसा तामिळनाडूचो। म्हणजे आंध्रा, गोवा आनी कर्नाटका म्हणजे अशें वांटून घालतले। पूण गोवा म्हाका पडचो ना, कारण हांव गोंयचो न्ही, अशी पद्दत आसता। पूण हांव हॅपी की दिग्विजय सिंग सारको एक सिनियर मनीस, अनुभव मनीस गोंयचो इन्चार्ज आसलो। Modi's elevation in Goa last Sunday has claimed first exit from NDA. Janata Dal United broke up its 17-year-old tie with NDA on Sunday, claiming BJP's move will damage the JDU's secular credentials. BJP has challenged Nitish Kumar to resign as CM and contest fresh elections to prove people's mandate to the JDU. BJP has given a Bihar Bandh call on 18th of June, while Nitish Kumar government is set to prove its majority on the floor of the house next week. उनके लिए भी ठीक नहीं।
इसलिए हमने फैसला किया है कि अब उनका रास्ता और हमारा रास्ता अलग होगा। इसलिए आज जो है वो गठबंधन एक तरह से यानी जेडीयू उससे बाहर आ गया है। मंत्री काम करने के लिए, मंत्री काम न करे ऐसी स्थिति मंजूर नहीं है। इसलिए हमने कुछ मंत्रियों को मंत्रिपरिषद से हटाए जाने के लिए सिफारिश कर दी और 11 मंत्री, उसका नाम आप जान लें। हमारे लिए तो मंत्री हैं, जब तक हमने सिफारिश कर दी है तब तक तो हमारे लिए मंत्री है क्या है, तो हमने वो सिफारिश भी कर दी है और इसके बाद पार्टी की मीटिंग में जो तय हुआ है उसकी जानकारी आपको आदरणीय शरद यादव जी ने दे दी है। इस गठबंधन के टूट के लिए कौन जिम्मेदार है? हम लोग जिम्मेवार नहीं हैं। इसलिए हम लोग जिम्मेवार नहीं है कि हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं है। हम लोगों को तो मजबूर कर दिया गया इस तरह का फैसला लेने के लिए। सबको मालूम है हमारे बेसिक कंसर्न क्या है। शरद जी ने बार बार नेशनल एजेंडा पर जोर दिया। सबको मालूम है कि हम लोगों के बुनियादी कंसर्न्स क्या हैं। Heavy rainfall and gusty winds on Sunday morning uprooted huge trees. 2 school buses of St. Joseph at Usgaon parked underneath have been damaged. One of them totally smashed. The banyan tree was uprooted and collapsed on the buses at around 6 in the morning. Meanwhile, a mango tree was uprooted at Meses. A private school bus got damaged underneath it. Huge losses have been reported. School buses faced fury of gusty winds on Sunday. Strong winds and rains across the state in past 24 hours have uprooted huge trees at many places. Early morning of Sunday witnessed a tree fall at Usgaon. Heavy rainfall with gusty winds uprooted trees. In Usgaon, uprooted banyan tree collapsed on 2 school buses at 6 in the morning. The private bus of St. Joseph School was totally destroyed. Balrat partially suffered damages. बसी दिसती पडना येयल्यार आनी पळोवपाक गेले जाल्यार दोनूय बसी भितर आहाय व्हडा पोंदाक आनी हांवें लेटर केली तारीख आसतना तारीख सांगलें पळय म्हणून तो म्हण पडटलो व्हड मोडोन येवन भेंडात तरी म्हणलें कातरूंक जायना जाल्यार पूण तेणें आपल्याक रिजन कितें दिलो आनी फॉरेस्टाक कितें लेटर केली आनी कोणें कांयच करूंक ना नको हांव लॉस कोण बेर करतलो तो लॉस कोण बेर करतलो तो नोकडो आनी कोणें करपाचें तें. In Mersey's, a mango tree uprooted and collapsed on a private bus. The incident occurred at around 5 in the wee hours of Sunday morning. The locals immediately called the fire brigade. आमकां हेल्प केलो आनी तशें आमच्या गांवच्या भुरग्यांनी बी हेल्प करून हें सगळें क्लियर केलें. आतां एक क्रेन हाडल्या ती हेजेर आसली बसीचेर आहली आमचो आंबो तो क्रेनीन काडून सेपरेट केला आनी आतां आमी आतां रोड क्लियर करता JCB हाडल्या आनी आतां रोड क्लियर करता. तसो आमचो सरपंच बी येयलो हंयसर पुलिसांनी हेल्प केला आमकां फायर ब्रिगेडनी हेल्प केला आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटले सगळे येवन पंचायतले ते आमकां सगळ्यांक हेल्प केला. Reporter Vivek Prabhu with video journalist Dinesh Karpe for Prudent. It's time for a short break. Stay tuned.